तो हेलो, कैसे हो? तो यार स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू गेटिंग ओवर इट की गेम प्ले वीडियो में। तो यार आज की वीडियो में हम फिर से गेटिंग ओवर इट खेलने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। तो यार मैं इससे पहले भी गेटिंग ओवर इट खेल चुका हूँ, तो आज आपने वो वाला पार्ट नहीं देखा तो आज देख लो, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यार अब आप सोच रहे होंगे कि भाई मैं अभी तो यहीं पर हूँ, लेकिन गाइस नहीं, मैं इस गेम को वन टाइम कंप्लीट कर चुका हूँ। ये देखिए, और गाइस वो भी सिर्फ 36 मिनट्स में। और गाइस इस गेम को एक बार ख़त्म करने के लिए मुझे अनन्या पांडे से ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, मतलब क्या ही कहें। तो यार अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार मैंने वन टाइम कंप्लीट किया तो मेरे लिए गेम इजी होगा, लेकिन यार नहीं गाइस, ये गेम अभी भी उतना ही फ्रस्ट्रेटिंग है गाइस जितना पहले था। क्या ही कहें यार, मतलब। और गाइस मैंने एक टाइम विन किया गाइस, तब भी जो मेरा पॉट है गाइस वो कुछ सिल्वर टाइप का पाया था, लेकिन अब तो यार बिल्कुल ब्लैक कर चुके हैं। मतलब मेरे को लगा था गोल्डन हो गया तो ब्लैक कर दिया सीधे। क्या ही कहें इसके ऊपर, तो यार मतलब कुछ बचा ही नहीं कहने के लिए। तो ये पहले तक तो यार मुझे एक घर को चढ़ना ही मुश्किल लगता था, लेकिन अब तो मैं इजीली क्लाइम कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आती मेरे को। फिर ये पाइप के बाद चले आते हैं पर ऊपर इजीली। Starting over is harder than starting up. If you're not ready for that, like if you've already had a bad day, then what you're about to go through might be too much. Feel free to go away and come back. I'll be here. This trip. And I'll understand if you have to take a break at any point. Just find a safe place to stop and quit the game. Don't worry, I'll save your progress always, even your mistakes. This game is a homage to a free game that came out in 2002 titled Sexy Hiking. The author of that game was Jazor, a mysterious Czech designer who was known at the time as the father of B games. And B games are rough assemblages of found objects. Designers slap them together very quickly and freely, and they're often too rough and unfriendly to gain much of a following. They're built more for the joy of building them than as polished products. In a certain way, Sexy Hiking is the perfect embodiment of a B game. It's built almost entirely out of found and recycled parts, and it's one of the most unusual and unfriendly games of its time. In it, your task is simply to drag yourself up a mountain with a hammer. And that act of climbing, in the digital world or in real life, has certain essential properties that give the game its flavor. No amount of forward progress is guaranteed. Some cliffs are too sheer or too slippery. गैस डेविल से चिमनी तक तो गैस मैं भी कर लेता हूँ, लेकिन उनके उसके बाद गैस थोड़ी प्रॉब्लम मुझे भी आ जाती है यार। तो यार मैं सोचा था कि गैस कि मैं गेटिंग ओवर इट की कोई कुछ मतलब जो कोई पार्ट्स होते हैं गैस उसके, जैसे आपको पता होगा ऑरेंज हेल या फिर डेविल चिमनी या फिर ऐसा ही कुछ चीज़, गैस मैं उसे क्रॉस करने का कोई सीरीज शुरू करूँ क्या? अगर मैं को करना चाहिए तो आप मैं कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और कौन सा पार्ट क्रॉस करने की बताऊँगा इसमें आपको, आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं डेफिनेटली उसके ऊपर एक वीडियो लेकर आऊँगा। Completely confident in your ability to get through them once you have the correct method or the correct equipment or just by spending enough time. In that sense, every pixelated obstacle in Sexy Hiking is real. The obstacles in Sexy Hiking are unyielding, and that makes the game uniquely frustrating. But I'm not sure Jazzo intended to make a frustrating game. The frustration is just essential to the act of climbing, and it's authentic to the process of building a game about climbing. A funny thing happened to me as I was building this mountain. I'd have an idea for a new object. तो यार गाइस मैंने यहाँ पर सोचा था कि गाइस मैं स्लाइड को स्किप कर दूंगा गाइस, जिसे हम कहते हैं स्लाइड स्किप। मैं वही यूज़ करके यहाँ से उस तरफ जाऊँगा, लेकिन गाइस जो वो है गाइस वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है गाइस, मतलब वो मैंने आज तक कभी किया नहीं है। तो मैं उसे फर्स्ट टाइम यहाँ पे ट्राई करूँगा, मतलब फर्स्ट टाइम तो नहीं, मैं उसे ट्राई करने की कोशिश करूँगा मैं उसे पार कर पाऊँ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल है गाइस, मैं ट्राई नहीं कर पाता। तो गाइस मैं उसे गाइस छोड़ो गाइस जाएगा अपन नॉर्मली अपना स्लाइड से जैसे जाते हैं गाइस वहीं से हम जाएंगे। तो मैं नॉर्मली वहीं से जाने का ट्राई करूँगा गाइस कि मैं इस गेम को कंप्लीट कर पाऊँगा से आके। And that can be like working with quickset cement. You mold your ideas into a certain shape that can be played with. And in the process of playing with them, they begin to harden and set until they're immutable, like rock. And at that point, you can't change the world. Not without breaking it into pieces and starting fresh with new ideas. For years now, people have been predicting that games would soon be made out of prefabricated objects, bought in a store and assembled into a world. And for the most part, that hasn't happened, because the objects in the stores are trash. I don't mean they look bad or that they're badly made, although a lot of them are.
I mean they're trash in the way that food becomes trash as soon as you put it in the sink. Things are made to be consumed and used in a certain context, and once the moment is gone, they transform into garbage. In the context of technology, those moments pass by in seconds. Over time, we've poured more and more refuse into this vast digital landfill that we call the internet. It now vastly outnumbers and outweighs the things that are fresh and untainted and unused. When everything around us is cultural trash, trash becomes the new medium, the lingua franca of the digital age. And you can build culture out of trash, but only trash culture. Be games, be movies, be music, be philosophy. Maybe this is what infinite and unsorted. There's 3D models of breakfast, Gen X's fanfic novels, Scan magazines, green screen Shia LaBeouf, banned stuff scenes on Live League. Facebook's got lifelike bots with unbranded adverts and candid shots of Kanye and Taylor Swift mashups, car crash epic failed GIFs, Russian dashcam vids, discussions of McRibs, discarded, forgotten, unrecycled, muddled, rotten, untitled. Everything's fresh for about 6 seconds, until some newer thing beckons, and we hit refresh. And there's years of persevering, disappearing into the pile, out of style, out of sight. In this context, it's tempting to make friendly content that's gentle, that lets you churn through it but not earn it. Why make something demanding if it just gets piled up in the landfill, filed in with the bland things? When games were new, they wanted a lot from you. Daunting you, taunting you, resetting and delaying you. Players played stoically. Now everyone's turned off by that. They want to burn through it quickly. A quick fix for the fickle, some tricks for the clicks of the feckless. But that's not you, you're an acrobat. You could swallow a baseball bat. Now I know, most likely you're watching this on YouTube or Twitch, while some dude with 10 million views does it for you. Like a baby bird being fed chewed up food. That's culture too. But on the off chance that you're playing this, what I'm saying is, trash is disposable, but maybe it doesn't have to be approachable. What's the feeling like? Are you stressed? I guess you don't hate it, you got this far, feeling frustrated. तो हम फाइनली आ चुके हैं गाइस ऑरेंज हेल पर। तो गाइस अब बारी है इसे क्रॉस करने की। तो गाइस अब इसे क्रॉस करेंगे। बैठते हैं जहाँ पर मतलब क्रॉस करते हैं जहाँ को पहले अपन बैठे टेबल पर, उसके बाद यहाँ पे अपन इसे जंप करके पकड़ लेंगे। Oh, you just lost a lot of progress. That's a deep frustration, a real punch in the gut. Music. Keep on trying, don't let it get भाई ऑरेंज हेल से पूरा स्टार्टिंग पे आके गिरे यार, क्या ही कहें भैया। अभी सॉन्ग कहाँ से बनने लग गया भाई, पहले सॉन्ग को बंद करें यार, क्या है ये म्यूजिक वॉल्यूम ये रखना है, इसे कम करते हैं पहले कम भाई। मुझे गेम ही नहीं खेलनी भाई, करो भाई इस गेम को रिसेट कर देते हैं, हम खेलना ही नहीं है भाई, क्या करें भाई इस गेम का वाह। तो यार मुझे आपसे एक बात पूछनी थी गाइस, क्या मैं अमंग अस की सीरीज शुरू करूं? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में #यस लिखो, और गाइस अगर नहीं तो गाइस आप कमेंट सेक्शन में #नो लिखो गाइस। तो यार बस आज की वीडियो में इतने, अच्छे लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे को प्रेस करें। तब तक के लिए बाय बाय।